we have not to go through the topic separately. हाँ, yes, we have to move vertically also, but simultaneously we just try to integrate the topic horizontally. मतलब क्या कि हम लोग vertically भी बढ़ेंगे लेकिन क्षैतिज रूप से सारे टॉपिक को इंटीग्रेट करके देखेंगे. So according to this formula, we have divided the history of modern India in 4 parts. The first part, the history of 18th century. In history of 18th century, there are the 2 subparts. The first half of 18th century, that is marked by the disintegration of the Mughal Empire and the rise of the regional states. मतलब जो 18वीं सदी का पूर्वार्ध है उसमें मुगल साम्राज्य का विघटन और क्षत्रिय राज्यों की स्थापना हमारा टॉपिक था और मुझे विश्वास है कि अभी भी आप लोगों को याद होगा. मतलब आप लोग उसको कम से कम समझ पा रहे होंगे. And in the second half of 18th century, we have started from the advent of the changes in Europe and how did the changes had the link with the greater socio-economic and you can say technological changes in Europe and how did European companies started to form themselves and move to international trade. So in this way हम लोगों ने वहां से शुरू किया कि यूरोपीय कंपनियां कैसे पश्चिम में अपनी गतिविधियां बढ़ाई. आप लोग कर्नाटक और पलासी बक्सर इनसे होते हुए और फिर आप इलाहाबाद के टीटी पर एंड किया इसको. So the rise of a mercantile British company into a political power, to political power. So that is our topic in the second half of 18th century. कैसे एक व्यापारिक कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में ढली. फिर हम लोग कॉलोनियलिज्म पर आ गए. गौर करने वाली बात है कि पलासी और बक्सर से पहले हम लोग कॉलोनियलिज्म पर नहीं थे. पलासी और बक्सर के बाद हम लोग कॉलोनियलिज्म में क्यों आए स्टूडेंट्स? जस्ट रिकॉल, क्योंकि जब आप एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाकर उसके इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, सो दैट इज कैरेक्टराइज्ड एज कॉलोनियल रिलेशन. सो दैट्स व्हाई द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड आफ्टर पलासी एंड बक्सर. सो द फर्स्ट फेज इज द मर्केंटाइल फेज. व्हाट इज द स्पेसिफिक ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया एंड हाउ डिड द इंटरेस्ट जस्ट give a direction to political policy, the administrative policy, the social policy, the cultural policy. So all phenomena is clear, all the factors are clear. फिर आप वहां से इंडस्ट्रियल फेज में आए, मतलब औद्योगिक चरण में वहां पर कैसे चेंज हुआ उसको देखा. फिर आप फाइनेंशियल फेज में आए. Then finally you can see we move toward the part third after doing the second one part, rise of nationalism. So we have just going across this topic and we are just at the end point now. You can say the first of all you can say the proto-nationalist movement, then first war of independence, then rise of modern nationalism for the first manifestation of the modern nationalism in the form of socio-religious reform movement of 19th century, which is characterized as Indian Renaissance, जिसको हम भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं. फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो फिर हम लोग आए फ्रॉम सोशल मूवमेंट, सोशियो कल्चर मूवमेंट टू पॉलिटिकल मूवमेंट. देन वी हैव मूव टू हिज टॉपिक, दैट इज फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1885 टू 1987. टू करेंट्स आर मूविंग ऑन, नेशनलिज्म एंड communalism. So nationalism, communalism both are just developing side by side. Then further we have moved to, which is specific from 1987 to 1914, then from 1914 to 1919, then Gandhi, advent of Gandhi and Gandhian ideology and program, and then from 1920 to 1929, 1929 to 1939. Yesterday we have finished this part. Today 1939 to 1945, the progress of nationalism and the progress of communism. देखो मेरे फ्रेंड्स, अब 2 स्टेज हम लोग का बचा. एक तो 1939 से 45 कवर करना है हमें और फिर 2 इयर्स का बच जाएगा. इसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे जो 1945 से 47 तक. तो चलिए हम 1945 से 47 की तरफ बढ़ेंगे. पहले मैं आपको एक बार स्टडी मटेरियल के बारे में समझा दूं. ये पहले हमको एक क्वेश्चन करवाने दे, एमसीक्यू क्वेश्चन. यू पीपल हैव टू डू, यू मे बी अ बिट क्यूरियस अबाउट द एमसीक्यू क्वेश्चन, सो लेट अस डू दैट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस इन 1939? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था. उन्होंने किस पार्टी को फॉर्म किया था? जैसे इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आजाद हिंद फौज, एंड सी रेवोल्यूशनरी फ्रंट एंड डी फॉरवर्ड ब्लॉक. यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है. प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ देम. बी फास्ट. Maximum D, yes. Correct answer. D is the correct answer, yes. Question number 2. Consider the following statements in the Government of India Act of 1935. 1935 का भारत सरकार अधिनियम के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें आपको चुनना है करेक्ट. Which of the statements given below are correct? 1. There was a provision of a responsible government in the provinces. मतलब इन प्रोविंसेस में, जब इन प्रोविंसेस मतलब जो राज्य है उनमें एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना. 2. There was a provision for establishment of a federal court, एक फेडरल कोर्ट का प्रोविजन. एंड 3rd, there was a provision of federal government at the center. और सेंट्रल लेवल पर एक फेडरल गवर्नमेंट की अवधारणा, मतलब फेडरेशन एट द सेंटर. एंड देयर वाज a provision of responsible government in provinces. There was a provision for the establishment of federal court. So there are the 3 choices and you have to select the answer. Be fast. D, yes, correct. These guys are very smart. They are doing well. MCQ question. Question number 3. In 1939, the Congress governments resigned in 7 provinces because A. The Congress could not form governments in other 4 provinces. B. Due to the rise of the leftists. मतलब आपको कहा गया है कि 1939 में कांग्रेस के 7 सरकारों ने रिजाइन कर दिया. चॉइस है A, क्योंकि कांग्रेस 4 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकी. B. Due to the rise of the leftism in the Congress, it became impossible for the governments to continue. मतलब क्योंकि वामपंथ का लेफ्टिज्म का बहुत ज्यादा दबाव था कि सरकार को चलना मुश्किल हो गया. एंड पॉइंट C. There was much communal unrest in Congress provinces. मतलब कि कांग्रेस के प्रोविंसेस में जो कम्युनल जो टेंशंस थे, जो कम्युनल अनरेस्ट थे, जो सांप्रदायिक तनाव था, ज्यादा हो गया. एंड डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ए बी सी गिवन एबव आर करेक्ट. मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. बी फास्ट. Okay. Guys, you have been so smart. Even before pronouncing my question and presenting my question, your answer is ready. So in MCQ, you don't find difficulty, and simply you have to you can say gather some more information slightly in second round and third round. Question number D is the answer. Then question number 4, with reference to the Pune Pact, which of the following statements are correct? The Pune Pact है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Point 1. According to this pact, the provision of separate electorate for depressed class was abolished. मतलब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस पूना पैक्ट में जो डिप्रेस्ड क्लास पीपल को, मतलब डिप्रेस्ड क्लास पीपल कर देते हैं, डिप्रेस्ड क्लास पीपल, द प्रोविजन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास पीपल वाज एबोलिश्ड. मतलब कि जो दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया. एंड सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास पीपल वर रिजर्व्ड इन द गवर्नमेंट. और इनकी जो सीटें हैं वो सरकार में आरक्षित कर दी गई. सो यू आर हैविंग द 4 चॉइसेस. बी फास्ट. In UPSC question. Yes, C is the correct answer. Question number 4. In which of the following sessions did the Congress adopted its 20-point socialist program? Congress adopt होना चाहिए. Adopt its 20-point socialist program. जैसे A है कराची सेशन, B है लखनऊ सेशन, C है फैजपुर सेशन, D है हरिपुरा सेशन. बी फास्ट.
Yes, Karachi session. Very smart. All the five questions are correct. Very commendable, my friends. You are very confident in MCQ questions. What about the long question? Anku, make me clear. What the situation in long question? Did they do the question? Elections of 1937. Give you know. In provinces है ना, in provinces there was a responsible government. It means कि yesterday whenever I have taught you the Indian government of 1935, so I think it's something you have missed. It is there was no room for Indians in the central government, but in provinces there was a responsible government. I just told you, because now the governor had to conduct his business with the support of the elected ministers and all the subjects which had earlier been divided between the transferred and reserved subjects on the basis of Indian Government Act of 1919. So all such subjects were directly placed under the control of the elected government. So that is responsible government. So it is correct, no doubt at all. There was a provision of federal government at the center. Provision to tha na. Federation का provision I have just told you the federation had to be formed while consisting of the British India and princely states. But there was a condition. At least 50% the princely states had to give their approval. Only then the federation could have come into existence. As the princely state didn't give approval, so the federation could not come into existence. मतलब इसमें ऐसा तो था कि संघीय व्यवस्था होगी जिसमें ब्रिटिश भारत के क्षेत्र और देशी रियासत के क्षेत्र दोनों होंगे, लेकिन उसमें शर्त रख दी गई कि उसमें देशी रियासत की स्वीकृति चाहिए. कम से कम 50% जो प्रोविंशियल हैं उनकी स्वीकृति चाहिए. तो 50% ने उनको अप्रूवल नहीं दिया, तो गवर्नमेंट नहीं आई, वो फेडरेशन नहीं आया, लेकिन फेडरेशन का प्रोविजन तो था. तो फाइन थर्ड ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट. Due to the right of the leftists to seats for the depressed class were reserved in government services. Oh, you are right. You are right. 100% right. Actually, here I could not take the notice. In fact, here I just you can say mint earlier. The seats for the depressed class were reserved in the government services. There is, and there is. I have just suddenly idea came to my mind in the assembly. So in the government services that is wrong. No, not government services. Actually, the situation of reservation came later. So here the answer is only one. A is the answer. That is correct. Actually, at that time, mistakenly I have observed here the central legislature or the state legislative bodies, but it is the government, the services. In government services, the seats were not here. That is correct. Only one is the answer. You are right. Okay. My friends, Mr. Ankur asked my friends, did they do the questions on mains or do they need my help? Please, my friends, give a hint. Do you need my help or have you done at your own? मतलब इस क्वेश्चन में जो हमने कल आपको होमवर्क के रूप में दिया था, उसमें आपको मेरी सहायता चाहिए, मेरा हेल्प चाहिए, या आपने कर लिया है? प्लीज इन्फॉर्म मी. बी फास्ट. Very simple. On daily basis, you people have to start writing, do the practice, and always keep in your mind Churchillian phrase. What is Churchillian phrase? Keep bugging in. Means you have to try and try again. You will add in MCQ question, you people have been confident. So even in descriptive question, you will be equally confident. जैसे आपने MCQ question में अपने performance को अच्छा कर लिया, उसी तरह से इसमें भी कर लोगे. देखो, ये कुछ नहीं है. पहले क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं. We have to make a proper analysis of the question and try to find out the keywords. Elections of 1937 boost to communal politics. Examine. Question is hypothetical, and we have to find out how did the elections of 1937 give a boost to communal politics. Here you can see. We can start the question in this way. The elections of 1937 proved a landmark. From the viewpoint of the rise of communal politics in India. मतलब बस एक सिंपल इंट्रोडक्शन आपका शुरू हो गया कि जो 1937 के चुनाव है उसने भारत में सांप्रदायिक राजनीति के विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा लैंडमार्क, यानी हिंदी में भूचिन्ह, इन इंग्लिश लैंडमार्क बनकर आया. तो यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर क्वेश्चन. सो दिस इज योर इंट्रोडक्टरी लाइन. इफ यू आर जस्ट गोइंग टू प्लेस द अनदर सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ थेसिस, so that will be definitely you can say a strong point. But in thesis we can give another line. The elections of 1937, the elections while giving a setback to Muslim League and Hindu Mahasabha. Muslim League and Hindu Mahasabha made them change their method and strategy. मतलब तुमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट यह दिया कि 1937 का जो इलेक्शंस है that through giving up setback to communal parties like Muslim League and Hindu Mahasabha made them change their method and strategy. तो मतलब है अब आपका थीसिस तैयार हो गया, अब आप तैयार हैं लिखने के लिए. देखो भाव तो इसके कंटेंट को तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने लीग और हिंदू महासभा को एक झटका देकर उनको उनकी रणनीति बदलने के लिए बस किया. ये आपका स्टेटमेंट हो गया. अब सटीक आपका थीसिस हो गया. अब यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करो और पहले मुस्लिम लीग के बारे में दो कि in elections the performance of
performance of the Muslim League, the performance of Muslim League remained extremely poor. It could not bag even the Muslim reserved seats in central legislature, nor could it form its government in any province. ओके, अब आपने एक डेटा दे दिया कि एक तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में ये कोई सीट बैग नहीं कर पाई, मतलब एक बहुत ही कम सीट में, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट, मतलब इट कुड नॉट बैग इवन द, एक मिनट, सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, जस्ट 1 मिनट, इट कुड नॉट बैग द सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स even the Muslim reserved seats in the central legislature, and nor could it form its government in any province. अब अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ना ही किसी प्रोविंस में अपनी सरकार फॉर्म कर पाई। तो यहाँ तक तो आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पर मेरे विचार से मुझे फ्लिक करो, हम अब आपको यहाँ से रास्ता बता देते हैं। अब यहाँ से बताओ कि that's why Jinnah was forced to change his future strategy। अब यहाँ से आप बता दो, दो चीज दिखा दो, मैंने he just tried to bring Muslim League and he tried to convert Muslim League from an elite party to the mass party for the Muslims। ये पॉइंट ये दे दीजिए। दूसरा पॉइंट आप दे दीजिए कि जिन्ना came to realize that कि the league requires a clear cut manifesto and program। So keeping this thing in mind, in Lahore proposal of 1940, it accepted the objective of complete freedom और पूर्ण स्वराज। यहाँ तक हो गया जिन्ना का। फिर आप पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए कि परफॉर्मेंस ऑफ द हिंदू महासभा was even worse than the league in the elections। So that's why just after the elections, Madan Mohan Malviya just took retirement from the post of the president of the party, and he was replaced by a hardliner president in 1938, and he was B.D. Savarkar। So B.D. Savarkar became the new president of Hindu Mahasabha। It was the time Dr. Baliram Hegdewal was replaced by a new RSS chief, and he was M.S. Golwalkar। So there started an era of Jinnah, Savarkar, and Golwalkar, and they gave emphasis over the aggressive policy of communal division। So in this way, it led finally to the, you can say, division। It led finally to the communal division and finally partition। तो इस तरह से करके आप इसको परफॉर्म करिए। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, सेंटेंस को आप खुद से फॉर्म करिए। आप सेकंड टाइम इफ यू विल सजेस्ट मी, यू विल आस्क मी आफ्टर 5 days कि सर डिक्टेट द आंसर। सो एक्चुअली डायरेक्शन विल बी सेम, बट द सेंटेंस वाज गोइंग टू चेंज बिकॉज़ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन राइटिंग। As you have developed, inculcated your confidence in MCQ questions, so I am suggesting you to develop the same confidence, my students, whether it may be MCQ question or the full length question. Confidence always helps you. Confidence will always work in your mind. That will make you more enthusiastic. So please maintain your confidence and start writing. Write one model answer on daily basis. It's my suggestion. And on daily basis I observe you. तो चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पर। पहले एक बार मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ पूरा। हम पहले एक्चुअली the study material which I had provided to you yesterday, so that consisted of 2 parts and 2 different phases. One phase starts from 1939 to 1945. So firstly you have to cover the first phase, okay, and then the second phase is 1945 to 1947. So that is the separate phase. So up here, let us start here. Up here you come to know that is Indian National Movement 1939 to 1945. There is growth of nationalism. August offer, August 1940. Individual Satyagraha, October 1940. Peace Mission, March 1942. Quit India Movement, August 1942. Webber Plan, May, June 1945. So we have to cover this part. Growth of communism, agreement between Jinnah and the British. Lahore Resolution, March 1940. Up here you can see, you will start from here. Growth of nationalism, August offer 1940. Provision of August offer. Individual Satyagraha, October 1940. Then Peace Mission, March 1942. Then reasons for rejection. Quit India Movement, August 1942. Strategy and program. Then significance of Quit India Movement. Question: the Quit India Movement brought the issue of India's independence to the first list of priority. And then Webber Plan. Growth of communism. Nationalism is over. So growth of communism between Jinnah and the British and Lahore Resolution, March 1940. Rule of Webber Plan in the field of Muslim communism. That's all. That part is going to end. And now this one part, that is for freedom and partition. So I'll do tomorrow. Okay. So my students, you are just given the suggestion. Today, even after attending the class, you have to make a revision up to this point again. So that will give you the clarity of vision. तो चलिए अब मैं आपको मेमोराइज ही करवाता हूँ, बिल्कुल ही आप उसको डायरेक्ट कर लो। चलिए मैं एक डायग्राम फिर बनाता हूँ, पूरा मैं इसे डिफरेंट बनाता हूँ। चलिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1939 to 1945. Okay, progress of nationalism, progress of communalism. My friends, here my point is,
That's all. Now, here we have to do one thing. Just let me. Up here, confusion about resignation of Congress ministries October 1939. Confusion among nationalists. Confusion among nationalists about the future strategy. Okay. Then you can say August proposal. Another name is Lilithgow proposal. The same, both are the same proposal. 8th August 1940. My students, I'm doing one thing. You should not get confused. I'm giving the direction. Actually, now I have to take the arrow. I will take the arrow in this direction, and I will take the arrow in this direction. Just observe here. Symbolic means progress of communalism. Here the progress of nationalism. Every proposal was giving boost to both nationalism and simultaneously to communism. मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा. मतलब इसमें जो मैं एरो ऐसे खींच रहा हूँ, उसे आप कंफ्यूज मत करना. हो सकता है कोई ऐसा भी इवेंट हो जिसमें मैं नेशनलिज्म की तरफ एरो खींचूं और कम्युनिज्म की तरफ ना खींचूं, क्योंकि उसे कम्युनिज्म को बढ़ावा नहीं मिल रहा. लेकिन जहां कम्युनिज्म को बढ़ावा मिल रहा, वहां पर मैं आपको कम्युनिज्म की तरफ भी एरो खींचूंगा, और जहां नेशनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा, उस समय नेशनलिज्म की तरफ भी खींचूंगा. हाँ, इसमें एक जिन्ना का होना चाहिए. जिन्नास कोऑपरेशन, जिन्नास लीग्स कोऑपरेशन with the government and जिन्नास अपॉर्चुनिस्ट पॉलिसी. मतलब जो लीग्स का कोऑपरेशन है, सहयोग है सरकार के साथ, और जिन्ना की जो अवसरवादी नीति है, इसको मैं पॉइंट बनाया. इसको हम सिर्फ एरो कम्युनिज्म में खींच रहा हूं. मैंने दिस एरो विल बी इन डायरेक्शन ऑफ कम्युनिज्म, बट माय स्टूडेंट यू विल टेक नोटिस ऑफ द फैक्ट कि आई हैव नॉट ड्रॉ साइमल्टेनियसली द एरो इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म, बिकॉज़ इसे नेशनलिज्म को कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसे कम्युनिज्म को सपोर्ट मिला, इसलिए इसी डायरेक्शन में दे दिया. इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट October 1940. But my friends, here I am just drawing an arrow towards the direction of nationalism, but not about communism. Why? Because it was not giving support to communism, rather it has given some support to nationalism. तो मैं यहाँ राष्ट्रवाद की प्रगति की दिशा में मैंने यहाँ एरो खींचा है, संप्रदायवाद की प्रगति की दिशा में नहीं खींचा है. अब आगे बढ़िए. क्रिप्स मिशन March 1942. Nationalism and communism both. Then Quit India movement August 1942. Direction towards nationalism and even direction towards communism. अब communism को direction क्यों मिल रहा है? I have to prove it. You will be a bit surprised. Quit India movement had to give a support to nationalism alone. Why I am just giving a direction towards communism as well. So I just make this point clear to you. Then the lastly you can see that is Wavell Plan. June 1945. Nationalism and communism both. My diagram is ready, a bit different diagram, and I'm confident you people will not get confused. आप इस diagram से confuse नहीं करोगे. मैं अभी सारे मुद्दे, सारी इशूज आपको क्लियर कर देता हूँ. Then everything will be crystal clear. Let me start now. The issue started from this Indian national movement, progress of nationalism and progress of communism. So it starts from the resignation of Congress ministry. In yesterday's class, I have made you clear. In fact, when the government didn't make a response to Congress demand, because Gandhi presented two conditions before the government, Gandhi made this point crystal clear that this time we are not going to extend our support unconditionally, as had happened earlier in course of the First World War. This time we have to extend the support only in the condition that you will
reciprocate to our support through giving some constitutional concessions to us. And this constitutional concessions minimum requirement is you have to form a responsible government in the center which will take care of the defense of India as well. And secondly, will give us the promise that just after the war you will allow Indians to frame their own constitution. मतलब गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि पिछली बार की तरह इस बार नहीं चलेगा, आप दो बातों का वादा करेंगे, गिव एंड टेक करेंगे, तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। एक तो आपको अविलंब अभी सेंटर में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करना है, और दूसरा आपको ये प्रॉमिस करना है कि वॉर के जस्ट बाद हाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करोगे, उसमें डिफेंस भी आपको गवर्नमेंट के अंतर्गत रखना पड़ेगा, और आपको ये भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वॉर के जस्ट बाद आप हमें भारतीय को, इंडियंस को अपना संविधान बनाने की शक्ति दोगे। And Gandhi also tried to convince the British, believe us, these two conditions are essential for even making the Indian people agree with the proposal of the participation in the war. आप विश्वास करें, हमें ये दो शर्तें अति आवश्यक है ताकि हम भारतीय को आपके युद्ध का सपोर्ट करने के लिए राजी कर सके, क्योंकि इस बार वो भी राजी नहीं होंगे। As the government didn't make a response, so Congress Ministry, Ala Command, the head of the Congress, they just brought a circular to against the government, and they had to bring some circular, and in this circular you can say it passed an order, and to all the government it suggested to make a resignation. So up to the end of the month October of 1939, all the ministries, all the governments simply resigned. Here I have to inform you that Bipin Chandra has hurled the praise on the Congress government and the Congress party. After all, for making a resignation, the Congress governments and Congress party amply put that they are not the power mongers, they were not the power seekers, and whenever required, they have simply just, you can say, kicked out the power and threw the power and came into the agitation mode. मतलब बिपिन चंद्रा ने कांग्रेस की इस बात के लिए प्रशंसा की कि ये कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने रिजाइन करके सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस शक्ति पावर का भूखा नहीं है, और जब जरूरत पड़ी तो उसने रिजाइन करके अपने सेल्फलेस बिहेवियर को दिखा दिया कि उसको कोई पावर से स्वार्थ नहीं है। Anyway, then now the question arises that the Congress ministry resigned, but it was a matter of great discussion and confusion among the Indian nationalist leaders. What will be the future strategy, how to face the condition, and what strategy had to be followed by the Congress and even some other parties which were associated with the Congress. For example, the Communist Party was also associated. There was rebel leader Subhas was also there, but Subhas was having his own ideas about that. I'm just specifying one by one leaders. Actually, Communist and Congress Socialist Party, they were almost unanimous in their advice. The Congress would make benefit from the situation of the war, and the Congress would have launched an all India movement and expel the British, making benefit from the condition of the British difficulty in course of the war. मतलब यहाँ पर जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो इस बात में सहमत थी, या उनकी आपस में इस मुद्दे पर उनका विचार यह था कि अभी कांग्रेस को मौका है, लोहा गर्म है, फौरन चोट मार देना चाहिए, और अभी सरकार डिफिकल्टी में है, और इसी समय कांग्रेस को एक मतलब जो इंडियन नेशनलिस्ट पार्टीज है उनको एक ऑल इंडिया मूवमेंट आरंभ करके और यहाँ से ब्रिटिश को मतलब एक्सपेल करना चाहिए इंडिया से। अब कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर विचार करने के लिए, इन ऑर्डर टू व्यू ओवर द सिचुएशन, द कांग्रेस पार्टी कन्वेन्ड अ मीटिंग at Wardha, that was a Gandhian ashrama, and all the leaders were invited there, even Subhash Chandra Bose. My students, all the leaders were having the divergent view about the future strategy against the British. For example, you can say Gandhiji. Gandhiji was ready to cooperate with the British, but Gandhiji was not ready to extend the unconditional support to the British as he had done earlier in course of the First World War. Gandhiji believed that at this time we will extend the support only in the condition the British would reciprocate our gesture, and the British would give something to us in return, some constitutional concessions. मतलब गांधी जी का कहना था कि देखिए पिछली बार की तरह इस बार नहीं होगा, ब्रिटिश अगर चाहते हैं कि हम उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दें जैसा कि पिछली बार दिया है, तो इस बार ये चीज नहीं होने वाली है। दूसरा, ये गांधी जी का मानना है। और what is the view of Jawaharlal Nehru? Jawaharlal Nehru believes actually Jawaharlal Nehru was inborn democrat, So he was opposed to the fastest power in the world, and fastest power, Hitler, Mussolini, they were the fastest power, they were representing the fastest power. So Jawaharlal Nehru believed that actually British is fighting a war of survival against the fastest power. So it is not wise, and even it is not helpful for democracy in the world we should launch any movement against the British during this critical juncture. But he simultaneously believed that, but it is not equally wise to extend the support to the British, because the British are not just to our demand, and British is making a propaganda. They are just, you can say, working for the protection of democracy in the world, but the truth is that they are denying our own democracy. So democracy is indivisible. If the British just try to save democracy in Europe, the same democracy should be extended to India as well. So we are not going to accept the double standard. So that's why we will not give support to the British in the wars. मतलब नेहरू का कहना था कि देखिए ये बात सच है कि दुनिया में जो फास्टेस्ट पावर है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जो हिटलर मुसोलिनी जैसे पावर है, और ब्रिटिश ऐसे फास्टेस्ट पावर के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो ये काम तो नोबल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम नॉर्मल कंडीशन में उनको सपोर्ट देते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने जो हमारे साथ बिहेव किया हुआ है, एक तरफ वो कहते हैं कि दुनिया में प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रजातंत्र को डिनाई कर रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा भाई? आपके यूरोप में प्रजातंत्र बचना चाहिए और आपने हमारे यहाँ प्रजातंत्र को डिनाई किया हुआ है। हम आपसे सिंपैथी रखते हैं, आप फास्टेस्ट पावर से लड़िए, हम आपके अगेंस्ट में कोई अभी ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं आरंभ करेंगे, नहीं तो फास्टेस्ट पावर को फायदा हो जाए, लेकिन हाँ हम आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि आपसे भी हम खुश नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड था। Subhash Chandra Bose was having the different view in this regard. Subhash Chandra Bose, actually, here the David Fisher informs us, when Subhash Chandra Bose, he was in Calcutta in his house, whenever his secretary informed him that the Second World War started, so Subhash Chandra Bose just took Second War as a major opportunity, and he started to dance in happiness. Oh, a very good opportunity for us. In Wardha session and Wardha conference at Gandhi Ashram there, which was convened in 1939 to view over the strategy, so Subhash Chandra Bose suggested that now it is right time for the Congress to launch an aggressive movement against the British. We have to make benefit from the situation of war, and we have to cash on the British difficulty in India. तो सुभाष चंद्र बोस को हमारा क्लियर कट नजरिया था, उनका कहना था कि देखिए ऐसा है कि ब्रिटिश भी डिफिकल्टी में है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ देना चाहिए। अब मैं आई एम अ बिट क्यूरियस, हमने आपको तीनों विचार बताए, गांधी जी के विचार बताए, नेहरू के विचार बताए, सुभाष के विचार बताए। आप लोगों से मतलब ओपिनियन ले रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि इनमें से किस विचार को हमें मानना चाहिए था?
My friends, please be fast, because here you know Ankur is working as a Sanjay and he is the Sanjay of the class, and I just want to enlist your response as well. My class will be communicative, तो बीच बीच में रुककर मैं आपका response चाहूंगा और आप लोग उतनी शीघ्रता से response देंगे. मिस्टर अंकुर, किसका विचार इनको लगता है? Subhash, you young people, young guys, you will definitely accept the view of Subhash Chandra Bose. My estimation and my conjecture was right. So you can see there are different views. So in this way, as the Congress was in Congress, you can say the Gandhi was having the dominance. So initially, neither Gandhi nor Nehru was in a mood to launch any moment. So in the meantime, the government responded finally. Government responded finally in the form of August proposal. What is August proposal? Well, the proposal is that after the war, Indians would be given a right to frame the constitution, and after the war, a constituent assembly had to be formed, and this constituent assembly had to be formed solely by Indians, And after the war, there would be the formation of a dominion status also, and there would be the framing of a constitution, and the constitution would be framed solely by Indians. Be careful. Here they have used the term solely. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान सभा बनेगी, constituent assembly बनेगी, वह मुख्यतः भारतीयों के द्वारा उसको फॉर्म किया जाएगा. But it does not mean that it was formed completely by Indians. It was formed solely by Indians. Means that the Indians would have the major say. But the government was not ready to place the defense of India, the defense of India under the control of the Indians. But in return, the government has given a proposal that a war advisory council would be formed by taking the Indian members, and at the advice of the Indian members, the war had to be conducted. And you can say, presently, in Viceroy council, some Indian members had to be associated, and there would be the formation of a war advisory council, and then this war had to be conducted at the advice of Indians as well. Means कि defense would be into the hand of Viceroy and the British government, undoubtedly. But at least the advice from Indians had to be enlisted. So ये था government का proposal. But the Congress was not satisfied, so Congress didn't accept the August proposal. अब मैं स्टूडेंट्स फिर मैं हिंदी में बोल देता हूँ. Actually उसमें August proposal में यह था कि वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस भी होगा. वॉर के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो मुख्यतः भारतीयों के द्वारा निर्मित होगी, और तत्काल गवर्नर जनरल की काउंसिल में कुछ इंडियंस की संख्या बढ़ा दी जाएगी, और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा, और इस परिषद के सलाह के आधार पर वायसराय, इस परिषद की सलाह को भी वायसराय सुनेगा और उसके आधार पर युद्ध को कंडक्ट करेगा. लेकिन डिफेंस वायसराय ब्रिटिश के अंतर्गत होगा. इसलिए इंडियन मेंबर्स को कांग्रेस को सेटिस्फाई नहीं किया, तो कांग्रेस रिजेक्टेड इट. अब मैं फ्रेंड्स, यू फाइंड हियर द टू एरोज इन दिस लिलिथो प्रपोजल, यू नो. बट अर्लियर देन दैट, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा एक क्रोनोलॉजी बदल गया है. आई हैव टू चेंज माय क्रोनोलॉजी. एक्चुअली here you find here, just 1 minute. Actually, I have placed here resignation of Commerce Ministry and then confusion among the Commerce leaders. That is true. And then the least cooperation with the government and Jinnah's appointment. हाँ, तो जिन्नाज अपॉइंटमेंट एंड लीस्ट कॉर्पोरेशन को हमें अगस्त प्रपोजल से ऊपर रखना चाहिए था. थोड़ा सा यहाँ पर मैं वो बाद में इसको डाल, लेकिन चलिए मैं इस कहानी को बता देता हूँ. आर्गुमेंटरी अलर्ट. यस, जिन्ना एक्चुअली, you know, the Congress refused to cooperate with the government in its war efforts, you know, and the Congress was making the propaganda at that time that the British are forcefully dragging India into the war. India is not doing the willing participation in this war. So the Congress was making a propaganda against the war. The British were, you can say, sometimes it is just an embarrassing situation for the British, because to other allies, to other, you can say, European countries, it had to give a reply whether India gave support to the war willingly or India is being forcefully dragged into this war. So in order, as a face-saving device, the British chalked out an alternative. What was the alternative? The British just, you can say, called Jinnah and told Jinnah, Viceroy Lilithgow was Viceroy was Lilithgow. So that's why the August proposal and Lilithgow proposal was one and the same. So Viceroy Lilithgow just asked Jinnah, Jinnah Sahab, you have to extend your support and you have to extend the league support to the government's war efforts. Actually, Lilithgow was making a plan. If Muslim League will give support to the British war efforts, so in that condition, that will be a face-saving device for the British, because we can give a signal to the rest of the world, no, we are not dragging India forcefully into the war. Although Congress is not giving us cooperation, but actually the second largest party and second important party of India, Muslim League, is with us. So as a face-saving device, the government just tried to talk to Jinnah. But it was a big opportunity for Jinnah. So Jinnah did bargaining with the government. Jinnah took a smile and asked Lilithgow, Viceroy, but return what you people will give to us? What will you people give to us? So Lilithgow replied, what do you want? Jinnah presented two conditions. One condition is, you have to accept that and you have to promise us in no future constitution of India had to be accepted without the approval of the Muslim League. Okay? Without the approval of the Muslim League. And the second one, if you have to talk on Muslim issue or any Muslim issue in India, you will simply talk to me, you will take me as the consensus leader on the Muslim issue. You have not to talk either to Sikandar Hayat Khan, the leader of Unionist Party, nor to Fazlul Haq, the leader of Krisak Praja Party, but you will treat me as the sole representative of Muslims in India. The government was having no option but to accept the Jinnah's proposal. So some critics have rightly quipped, earlier than this Lilithgow proposal and earlier than the Second World War, the government was encouraging Muslim communalism very carefully, undoubtedly. But the government could never make a surrender before the communal demand of the Muslim League. But in condition of war and to get more benefit and to take support from the Muslim League, the British government almost made an unconditional, you can say, the government almost surrendered to the communal Muslim demand. So it became quite, you can say, damaging to the unity and integrity of India in future. And my friends, so that's why in Lilithgow, come to the Lilithgow proposal. How did this Lilithgow proposal or the August proposal move in the direction of communalism? How did it move in the direction of communalism? Here I have to cite an example. In August proposal, there was a provision. What was provision? Provision was that there was a provision was that no constitution. Actually, there was a provision earlier after the war there would be the formation of a constituent assembly solely by Indians. But simultaneously, it was expressively stated no constitution would be accepted in India on which the Muslim minority was not giving the approval. Here they have consciously avoided the term Muslim League, because
Actually, how could they expressively mention Muslim League? It means it could have given the signal to, oh, there is a secret connivance between the league and the government. So in place of Muslim League, they have used the term Muslim minority. Without the approval of Muslim minority, no future constitution had to be accepted. So in this way, my students, for the first time in Lilith's proposal, the government gave a veto power to the Muslim League. The government gave a veto power to the Muslim League against the future constitutional development of India. ये एक बहुत बैड ओमन, बैड साइन हो गया. देखिए, एक्चुअली हुआ ऐसा कि एक्चुअली वॉर के समय आपको मैंने बताया कि कांग्रेस वॉर एफर्ट्स में ब्रिटिश का साथ नहीं दे रही थी, तो ब्रिटिश बड़ा एम्बैरेसिंग, बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में थी, क्योंकि दुनिया को उसको जवाब देना पड़ता था, और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये भी प्रचार कर रही थी कि देखिए भाई, ये हमको युद्ध में जबरन घसीट रहे हैं. तो अब ब्रिटिश को चाहिए था कुछ ऐसा अपने चेहरा बचाने के लिए, कैसे हम अपने आप को बचाए. तो लिलिथो ने जिन्ना को बुलाया और सोचा कि उसने अपनी रणनीति बनाई, कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं कर रही, अगर हमको लीग से सपोर्ट मिल जाता है इस वॉर में, तो हम दुनिया को यह तो बता सकेंगे, चलो भले कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं कर रही, तो दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी लीग हमें सपोर्ट कर रही है, तो हमारे सेविंग डिवाइस हो जाएगा. तो उन्हें जिन्ना को कहा कि जिन्ना साहब, इस वॉर में लीग हमें सपोर्ट करे. तो जिन्ना को तो अपॉर्चुनिटी मिल गया, उसने तो बार्गेनिंग कर डाली. उसने कहा कि लेकिन बदले में आप हमें क्या देंगे. तो लिलिथो ने पूछा, आप क्या लेंगे. अब इस तरह का एकदम नेकेड कन्वर्सेशन नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा कवर्टली हो रहा था. मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. तो जिन्ना ने दो शर्तें रख दी. एक शर्त उन्होंने कहा कि आप इस बात को स्वीकार करिए कि भविष्य में आप कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडिया के लिए जिस पर मुस्लिम लीग की अप्रूवल, उसकी सहमति ना हो. और दूसरा, आपको यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आप मुसलमानों के एकमात्र नेता के रूप में आप मुझसे बात करेंगे, ना तो आप यूनियन पार्टी के लीडर से बात करेंगे, ना ही फजलुल हक प्रजा पार्टी के लीडर से बात करेंगे. तो जिन्ना चाहता था कि हम सिकंदर हयात खान और फजलुल हक को साइडलाइन करके हम सोल बन जाए. ब्रिटिश ने उसकी दोनों शर्तें मान ली. लिलिथो ने. इसी पर किसी क्रिटिक ने कहा कि देखिए, अब तक क्या था कि मुस्लिम लीग कि सांप्रदायिक राजनीति को ब्रिटिश चुपके चुपके तो भड़का रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने इतना खुलकर कभी समर्थन नहीं किया था. या आप कह सकते हो कि मुस्लिम संप्रदायवाद के समक्ष गवर्नमेंट ने ऐसे घुटने कभी नहीं टेके थे जैसा उन्होंने अभी टेक दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में. और इसी का रिपरकशन आपको दिखता है लिलिथ प्रपोजल या अगस्त प्रपोजल में, क्योंकि आप उसके प्रावधान को देखते हैं. उसमें है युद्ध के बाद एक संविधान निर्मित होगा जो मुक्त भारतीयों के द्वारा होगा, परंतु वहीं पर क्लॉज डाल दिया कि भारत में कोई भी ऐसा संविधान मंजूर नहीं होगा जिस पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं हो, मुस्लिम माइनॉरिटी की सहमति नहीं हो. वहां पर लीग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वर्चुअली एक चूंकि कवर दिया गया, डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, परंतु मुस्लिम माइनॉरिटी शब्द का एक नई तरह से लीग का फेवर था. इस तरह से ये प्रपोजल हुआ. इसलिए संप्रदायवाद कम्युनिज्म को प्रोत्साहन दिया. अब यहां तक तो समझ गए होंगे. यस मिस्टर अंकुर. What you once again repeat the question. तो मिस हो गया क्या तुमको? तो पूरा पढ़ो ना. Who has asked this question? धीरज, मैं एक बात आपको बताना चाहता. धीरज, जब हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं ना, तो सोशल साइंस पढ़ने का एक सर्टेन तरीका होता है. जैसे कोई भी इंडिविजुअल अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. जैसे आपको अगर गांधी नहीं होती तो भारत को आजादी नहीं मिलती, जिन्ना नहीं होती तो भारत का विभाजन नहीं होता. देखो, मुद्दा है जिन्ना का नहीं. आप याद करिए पहले सर सैयद अहमद खान. हियर यू कैन से एन इंडिविजुअल इज नॉट सो स्ट्रांग टू डिसाइसिव फैक्टर. एक्चुअली ऑब्जेक्टिव मटेरियल फैक्टर अकाउंटेबल बिहाइंड दैट. बेसिकली यू नो द सिचुएशन वाज ऑलरेडी क्रिएटेड देयर एंड इट वाज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ सर सैयद अहमद खान. एक्चुअली इट वाज जिन्ना वाज द पर्सनिफिकेशन ऑफ द एम्बिशन ऑफ द मुस्लिम एलिट क्लास. इफ देयर कुड नॉट हैव बीन जिन्ना, there could have been some other personality to make benefit from the situation. So we can't say that if Jinnah was not there to India, there could not have been a partition of India. But it is equally true. Individual is also having some role. So maybe Jinnah has made the things easy. If there could have been some other Muslim leaders, so the whole process might have been slightly delayed. We cannot make a conjecture of what could happen. In history, there is less scope for what if and what might be. मतलब क्या हो सकता था, इसकी कंजेक्चर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते. अगर जिन्ना नहीं होते तो पार्टीशन नहीं होता. मिस्टर अंकुर, should I go further? Question is not clear. Read again, read again, please slowly and name. Pintu, yes. Was Congress not aware about the proposal during that time? Pintu, your question is not clear. Please clarify the question. I could not understand what you are likely to ask me. Why Nehru rejected the and started that and stated that dominion status. Priti, I have already made you clear that whatever proposal was given by August proposal, that was not sufficient to satisfy the Congress. Because you already know the fact that, Priti, please be a thinking creature. Nehru was against the proposal of dominion status right from the time of Nehru report. I am not recalling. It was under the pressure of Nehru and Subhas. There was the acceptance of the complete proposal of complete freedom in Lahore session. I am not recalling, Priti. Again, you can say, so Nehru never preferred the status of dominion status. First thing. Second one thing was that the main issue was the defense of India. And on the issue of defense of India, the British was not ready to make any compromise, and they are not ready to make Indians partners in formulating the defense policy of India. तो ये भी कांग्रेस के लिए डिसैटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा कारण था. Actually, Deliverance Day was that is okay, dear friends. Okay, dear friends, first of all, I am extremely sorry for the inconvenience. Actually, today in Delhi, there is a very inclement weather. So due to inclement weather, now there is the internet problem. All the, you can say, different lines were disturbed, because very adverse condition in Delhi today. Whenever I am teaching class, there was the heavy rain, and you can say the, very fast wind. So that is going to create some problem. Now, coming to the point, I am making clear. So in this way, I just observed that's why I have already replied the question of Priti. So should I go further now, Mr. Ankur?
Now I cannot wait. You have to find out your own way, but I should not stop here because I've already spent too much time here, Mr. Ankur. I mean, future we will once again try to find out. So now the next one point, what is happening? Congress was quite in a fix what to do or what not to do, and the Congress was not just try to bring British in any difficult situation. So that's why we'll come to know that the Congress under Gandhi started that is called the individual satyagraha movement. Individual satyagraha movement. It was a very simple type of movement. Here you can say some satyagrahi was just moving at a spot, and he was making an anti-war speech. We are not with the British in this war. The British are forcefully driving us into the war, and after that he was just sitting on fast. In order to make a protest against the British gesture towards India and the forceful dragging of British of India into the war. So he used to sit on the fast, and in the meantime, there was the government, the police is just coming on the spot, and police is catching him up, putting him into the van and just carrying to the jail. So it was a very simple process. It was not going to make any sort of difference. And this individual satyagraha movement started in October 1940, just after Lilith proposal and failure of Lilith proposal. तो अब अगला कदम आप देखते हो कि क्या हुआ, उसको कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह मूवमेंट। अब इस व्यक्तिगत सत्याग्रह मूवमेंट में क्या हुआ, इसमें गांधी जी ने बड़ा एक सिंपल सा तरीका अपनाया कि वो क्या है कि भाई एक कोई सत्याग्रही बैठेगा, एंड दिस सत्याग्रही वो पहले एक युद्ध विरोधी भाषण देगा, और युद्ध विरोधी भाषण देने के बाद वहीं पर फास्ट पर बैठ जाएगा। उधर से पुलिस आएगी और पुलिस आती थी और आकर उनको पुलिस गाड़ी में बैठा के ले जाती थी जेल। At the first Satyagrahi, we were informed that it was Acharya Vinoba Bhave who sat on the fast. Then came the turn of Pandit Jawaharlal Nehru. तो हमें सूचना मिलती है कि पहले सत्याग्रही के रूप में वहां पर विनोबा भावे बैठे, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू. In this way, it didn't make any sort of major difference. In the meantime, my students, I have to inform you, because whenever I will teach you the world history part and make you clear, here is the point कि even USA jumped into the war, because on 7th December 1941 there was a Japanese attack on American Pearl Harbor. It was a naval base, and all the American planes and ships were devastated by Japanese. So on 7th December 1941 and on 9/11, so USA was equally shocked at this incident and he jumped into the war. But in Southeast Asia, Japan became too much active, and it was the time war theater changed from Mediterranean Atlantic to Pacific Ocean. And Japan, although it was a tiny state, but it became so much powerful, it did such a vast military preparation in Indo-Pacific, you can say in Pacific region at that time, in Pacific region, the Japanese almost expelled all the colonial power. For example, Americans were just expelled from Philippines, the British were expelled from Malaya and Singapore, the French were just expelled from Vietnam, and Dutch were expelled from Indonesia. So in this way, the Japan, just you can say, adopted very aggressive posture. And my friends will later come to realize it was the time even Subhash Chandra Bose has gradually escaped out from India. So let me speak here, I just make you clear here. Actually, what happened? The incident happened in the manner that Subhash Chandra Bose, he was in his personal apartment in Calcutta. But as the British were very suspicious about his movement, because Subhash Chandra Bose, right from the very beginning, he was talking in terms of using the war against the British. So the British were a bit apprehensive about his movement. So that's why earlier the British put him into the jail. But Subhash Chandra Bose, after moving to jail, then Subhash Chandra Bose was utterly shocked, because Subhash Chandra Bose came to realize that he gradually realized that in this way I just languished in the jail, you can say, and my whole life would be spent into the jail, and I could not make benefit from the condition of Second World War, and the opportunity would simply slip out from my hand. So that's why Subhash Chandra Bose started fast unto death in jail and told to the British authority directly, if you are not freeing my body, I am going to free my soul from the body, I will do the fast unto death. So now the British came to realize that in case Subhash Chandra Bose fell into any danger, so it might have created a major backlash in India against the British government. So it is better to release Subhash, but put him under the house arrest in place of jail. So Subhash was placed in the house arrest, and there was the police, you can say, vigilance around his house, and 24 hours vigilance. So Subhash was within the house, and outside there was the complete vigilance. Subhash was planning to escape from India. So he told his nephew, that was the son of his elder brother Sarat Bose, his nephew was Cecil Kumar Bose. So he told Cecil Kumar Bose, who was a doctor by profession, please help me to escape from my house in larger interest of the nation. So Cecil just helped him, Cecil Kumar Bose, and Cecil Kumar Bose, in the guise of you can say an insurance, an agent of an insurance company in a motor vehicle, and in the guise of a Pathan, he just came into the bungalow. When police inquiry told that I am an agent of the insurance company, I have just come to take certain signature from Subhash, and he brought some documents and he entered into the house. And there he changed the dress, and the same dress was worn by Subhash, and Subhash, in the guise of the same Pathan, just sat in the car and moved out from the house. And then he just went directly in Gomo station of Dhanbad and catch up the train, and the train was moving to Bombay. So British could have been informed about his escape. In the meantime, he reached Bombay. In Bombay, he just started to play the role of a dumb and deaf, and with the support of someone, he just escaped to Afghanistan. And in Afghanistan, he was searching a passport to move outside from Afghanistan. He was in the guise of Pathan, so searching for passport, and here the Mussolini helped him, and he was provided a passport of Italy in the name of Orlando Massota, and then he moved from Afghanistan to Germany. In Germany, the Hitler's foreign minister Ribbentrop just welcomed him in Germany, and then Hitler tried to use Subhash Chandra Bose against Soviet Russia, because at that time you can say Germany already invaded Soviet Russia. So Hitler, just tried to use him against Soviet Russia. So Subhash was, at that time, he was not in the mood, but it was in 1941 he formed an organization in Germany, and this organization was known as Indian Legion. This was the name of organization. But Subhash was, after all, he was having socialist conviction, and he was having some inclination towards socialism and communism. So his heart and soul didn't allow him to work against Soviet Russia. So he told Hitler, better to send me to Japan. It was a very difficult task at that time, because in Japan, you can say, even the USA, naval force of USA was doing patrolling in Asia Pacific, and it was quite vigilant about any movement of any ship. But in a German submarine, he secretly moved from Germany to Japan, and he crossed the Pacific and reached Japan. And after reaching Japan, then started the career of INA. So I just discussed this phenomena later. अब चलिए मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ. एक्चुअली हुआ क्या कि बेसिकली अब वॉर का थिएटर बदल गया, क्योंकि जापान वॉर में प्रवेश कर गया और जापान ने अमेरिकन नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया. तो अब अमेरिका तो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त उसमें हुआ, और अमेरिका वॉर में जंप कर गया. आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे, ब्रिटेन पहले अमेरिका की बहुत सारी मिन्नतें करता था कि वॉर में आ जाइए, वॉर में आ जाइए, अमेरिका अवॉइड करता था. अब अमेरिका आ गया वॉर में. तो क्या है कि अब जो मेन थिएटर है वो अब मेडिटेरेनियन अटलांटिक के बजाय बन गया पैसिफिक रीजन. और जापान एक टाइनी कंट्री था, छोटा सा देश था, परंतु इतनी जमकर सैनिक तैयारी की हुई थी कि जितने भी इंपीरियलिस्ट पावर से जापान ने उन सभी को खदेड़ दिया. अमेरिका को फिलीपींस से,
ब्रिटेन को मलाया और सिंगापुर से, फ्रांस को वियतनाम से, डच को इंडोनेशिया से, सबको उसने खरीद दिया। अब यही समय है माय स्टूडेंट्स कि बाकी जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो तो अभी कोई मूवमेंट चलाने की उसमें नहीं है, और लेकिन यही है कि सुभाष चंद्र बोस भी जापान की तरफ बढ़ गए, क्योंकि हुआ ऐसा कि अपने कलकत्ता हाउस में थे और वो चूंकि उनका इरादा ब्रिटिश को सही नहीं लग रहा था, वो लग रहा था कि कुछ ना कुछ हमारे अगेंस्ट में प्लान कर रहे हैं, इसलिए उनको पहले उठा के जेल में रख दिया। और सुभाष को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली, वो तो जेल में ही कट जाएगी, तो सुभाष ने जेल में ही वहीं पर फास्ट एंड टू डेथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। ब्रिटिश को कहा कि आप हम पर हमारे शरीर को आजाद नहीं कर सकते, तो हम अपनी आत्मा को अपने शरीर से आजाद कर ले रहे हैं, मतलब हम शरीर को त्याग रहे हैं। तो ब्रिटिश को लगा कि पता नहीं कहीं कुछ इनका डेथ कुछ हो गया इस तरह की बात, तो इंडियन लोगों का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उनको जेल से निकालकर उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया और वहां पुलिस का विजिलेंस पहरा बैठा दिया। सुभाष को लग रहा था कि भाई ऐसे में तो निकल नहीं पाएंगे, और उनको जाना था कहीं बाहर, और आउटसाइड सपोर्ट से ब्रिटिश को भगाने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने शिशिर कुमार बोस उनका भतीजा था जो शरद बोस का बेटा था, तो उनको उन्होंने राजी किया इस बात की हमें भगा दो, देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये आवश्यक है। तो शिशिर कुमार बोस एक इंश्योरेंस कंपनी के एक एजेंट के रूप में गाड़ी में बैठ के आए और उन्होंने पठान का ड्रेस पहन रखा था बिल्कुल, तो किसी भी एंगल से बंगाली नहीं दिख रहे थे। और जब पुलिस ने उनसे इंक्वायरी किया कि कहाँ है, क्या है, जब बंगलों में घुसे तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नेचर लेना है। तो पुलिस ने जाने दिया, अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने सुभाष को ड्रेस चेंज करवा दिया पठान के ड्रेस में। सुभाष वही कुछ समय लगभग 1 आवर के बाद वो उसी पठान के ड्रेस से गाड़ी पर बैठ के निकल गए, बॉम्बे स्टेशन पर गए, पहले धनबाद। जब तक ब्रिटिश को पता चला तो बॉम्बे निकल गए। बॉम्बे में एक गुंडा और बहरा का भूमिका निभानी शुरू कर दी ताकि पकड़े ना जाए, एक और किसी को, एक सपोर्टर को ले लिया साथ में, फिर अफगानिस्तान निकल गए। अफगानिस्तान में जाने के बाद दूर जाने के लिए अब उनको चाहिए था पासपोर्ट उनके पास नहीं था, तो इटली से सहायता मांगी, तो मुसोलिनी के सपोर्ट उसको मिला और उनको एक पासपोर्ट ऑर्लैंडो मैसोटा के नाम से इटालियन पासपोर्ट मिला, उसको लेकर निकल गए जर्मनी में उनको हिटलर के विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप ने उनका स्वागत किया। उन्होंने रिबेनट्रॉप ने हिटलर से मिलवाया, तो हिटलर ने उनको वहीं उन्होंने इंडियन लीजन नामक एक संगठन 1941 में बनाया भी। फिर हिटलर उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं सोवियत रूस के अगेंस्ट में करना चाहता था, क्योंकि हिटलर सोवियत रूस पर हमला कर चुका था। सुभाष का कहीं ना कहीं जो पक्षधरता थी, समाजवाद के प्रति रही थी, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने हिटलर से पेशकश की कि आप उनको जापान छोड़ दीजिए। तो हिटलर ने ही जर्मन पनडुब्बी में उनको जाने की गुंजाइश की, बहुत खतरनाक स्टेप था, लेकिन जर्मन पनडुब्बी में चुपके से निकल गए सबमरीन में और जापान पहुंच गया। आगे इसकी कहानी आजाद हिंद फौज से संबंधित होगी, मैं आगे आपको बताऊंगा। इन दिस सुभाष escaped. A point is that as the British faced some sort of discomfiture in the war in Southeast Asia against Japanese, so then American President Franklin D. Roosevelt started to create pressure over the British Prime Minister Churchill. And now time has come, you have to make a trust with, and you have to make some peace with Indian National Congress. Because if so far as you are not getting the support of Indian National Congress, you cannot use the resources of India in the full capacity to use against Japanese. That is required. So please do something for making trust with Indians and the Congress particularly, So now Churchill, Churchill had to face some pressure from his allies. Roosevelt is one, and the head of China, the president of China, Chiang Kai-shek, was other. But my friends, in the world history part, I'll make you clear that Churchill was a man of a different stuff. He was not a very common type of man. He was a very different type of man. So Churchill was not in a mood to make a real compromise with Congress or Indians, but he, in order to satisfy his partners or allies, he simply, you can say, pretended to send a mission to India. So Cripps mission was basically a ploy of Churchill to satisfy his partners. He didn't try genuinely to do any sort of compromise and to make any compromise with the Congress and Indians, So he sent Edward Cripps in March 1942 with a mission. So this mission is known as the Cripps mission. So Cripps mission, and in Cripps mission, what proposal was brought by Cripps mission, actually according to this mission, after the war, India had to be offered the dominant status. India would be given the dominant status after the war, and dominant status, but India will have the right to, and India would enjoy the right to even make a complete separation with the British Empire. Now, India would enjoy dominant status, but India would enjoy the right to make a complete separation from the British Empire. So this was the one proposal. Secondly, after the war, India had to frame a constituent assembly. India had to frame a constituent assembly after the war. That is the second one. And this constituent assembly had to be formed completely by Indians. It had to be formed fully by Indians or completely by Indians. But here you will find some advancement from this Nellisco proposal, because in Nellisco proposal there was solely by Indians. Here the term had to be changed, that is fully by Indians. So it was a promise. But this Cripps mission was not ready to immediately place the defense of India under Indian control. So it was not ready to place the defense of India under defense control. So Gandhiji was shocked with the proposal. Gandhiji quipped, "You are giving us a post-dated check." Post-dated check means, suppose you are giving me dominant status after the war, then right to frame a constitution after the war. So then what are you giving us presently? Nothing. So you are giving us the post-dated check. So some, you can say, witty journalist even added the term on a failing bank. Means the British are giving us a post-dated check associated with the bank which is likely just to collapse, just likely to fail. Means it was a attack on the British, and it was simply a sarcasm against the British. You are making promise after the war you will give me this and that, but the situation is quite adverse against you. Germany is too much aggressive in Europe. In Japan you have fled from Malaya and Singapore, because Japanese have just expelled you from Southeast Asia, but still you are promising us after the war. So will you survive after the war? You will give us the concessions. So that's why the journalist had made a statement. And here, my friend, one thing I have to make you clear. As in Nellisco proposal, so in Cripps mission, you find that one arrow is going in the direction of nationalism and other in the direction of communism. In nationalism, you can say at least there was some advancement that in future constitution would be made fully by Indians. But in communism, in what way? So there was a very objectionable proposal here. And what is this? The Indians had to frame a constitution, and this constitution would be framed fully by Indians. But if some state didn't accept this constituent assembly, if some state just prefers to remain separate, it would be allowed to frame its own constituent assembly. Means if some state or some province or some region didn't agree to join this constituent assembly, so it would be allowed to frame its own constituent assembly, to form its own constituent assembly, So Congress smelled there some elements of Pakistan. You are just you are doing this sort of thing. You can say that is, it means you are talking in terms of complete separation now, because you are talking in terms of Pakistan. But my friends, the ironical situation was that Cripps mission was such a proposal which was rejected by both the Congress and the Muslim League. Neither Muslim League accepted this nor Congress.
तो मैंने आपको कहा कि अब क्या हुआ कि ब्रिटिश के तो पांव खा रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आया तो उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो चर्चिल था उस पर दबाव डाला कि भाई आप इंडिया के साथ, इंडियंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, अब आपका ये नहीं चलेगा, नहीं तो आप इसी तरह युद्ध में, वॉर में आपका सिचुएशन वीक हो जाएगा। तो उसने चर्चिल तो बड़ा ही, मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री में वो तो स्टफ ही बहुत अलग था, मैंने उतना बड़ा कन्विक्शन, उतना बड़ा जिद्दी इंसान शायद ही वर्ल्ड में कोई होगा, और सेकंड वर्ल्ड उसकी जीत की कहानी ब्रिटेन जीत पाया, ट्रुथ है। तो उसमें उसने चर्चिल ने एक नौटंकी दिखाई, मतलब वो इस मूड में नहीं था कि हम इंडिया से कॉम्प्रोमाइज करें, एक बार जो ठान लेता था वही करता था, लेकिन था बहुत ही विली पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर था। तो उसने सोचा कि चलो हम अपने एलाइज को कम से कम सेटिस्फाई करते हैं। इधर रूजवेल्ट भी प्रेशर डाला था, और चाइना का प्रेसिडेंट वो भी पार्टनर था, वॉर पार्टनर जिसका नाम था चियांग काई शेक, वो भी प्रेशर क्रिएट कर रहा था। तो उसने एडवर्ड क्लिप्स को एक मिशन लेकर भेजा, और एडवर्ड क्लिप्स ने कोई ऐसा नया प्रपोजल दिया नहीं। उसने कहा कि वॉर के बाद एक डोमिनेंट स्टेटस बने, इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, हाँ इंडिया को ये फ्रीडम होगा, वो चाहे तो राइट टू सेपरेशन भी कर सकता है, डोमिनेंट स्टेटस का मतलब प्रत्यक्ष विदेश से निकल भी सकता है और फ्री भी हो सकता है इन फ्यूचर में, इन तत्काल उसको डोमिनेंट स्टेटस देंगे। और दूसरा उसने कहा कि युद्ध के बाद, वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का राइट इंडियंस को मिलेगा, वो असेंबली पूरी तरह इंडियंस के द्वारा होगा, मतलब सोली नहीं, पूरी तरह। लेकिन जब पूछा गया कि भाई आप डिफेंस में क्या दे रहे हो, तो उसने कहा कि डिफेंस हम इंडियंस के हाथ में नहीं दे सकते, मतलब वो इंडियंस को डिफेंस के लिए राजी नहीं हुआ, टालमटोल कर गया। तो इस पर गांधी जी थोड़ा इरिटेट हुए, शिमला में बात कर रहे थे एडवर्ड क्लिप्स से, तो उन्होंने कहा कि आप हमें पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब हुआ कि जो भी आप दे रहे हैं युद्ध के बाद दे रहे हैं, अभी तो आप तत्काल हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है पैकेज। उसी में एक बड़ा ही कोई गुस्सा बुद्धि वाला पत्रकार था, जोड़ दिया उन्हें फीलिंग में कि आप एक ऐसा चेक दे रहे हैं जो बैंक फेल करने वाला है। मतलब उनका ये कहना था कि भाई आप वॉर में यहाँ जापानी आपको साउथ ईस्ट एशिया से खरीद रहे हैं, वहाँ आपको जर्मन लोग यूरोप में परेशान किए हुए, आप फिर भी हमें आश्वासन दे रहे हो, प्रॉमिस करो कि वॉर के बाद हम देंगे, तो वॉर के बाद आप खुद रहोगे तभी तो हमें दे पाओगे। तो यही हुआ, अंत में ये बात टूट गई। अब मैंने आपको बताया कि देखो अब ये क्लिप्स मिशन में भी हमने एक एरो नेशनलिज्म की तरफ ले गए, दूसरा एरो हम कम्युनिज्म की तरफ ले गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? कम्युनिज्म का मतलब ये हुआ कि उसमें जो संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का राइट इंडियंस को दिया गया, तो उसमें एक क्लॉज दे दिया गया कि अगर कोई रीजन या प्रोविंस अगर नहीं चाहे उस संविधान सभा में पार्टिसिपेट करना, उसको एक अलग संविधान सभा बनाने का राइट मिलेगा। तो ये तो एक तरह से पाकिस्तान की मांग को उकसाना हुआ। इस पर कांग्रेस लीडर्स डिससेटिस्फाई हुए, लेकिन मैंने आपको बताया कि देखिए ये भी एक विडंबना है, मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि भाई इसमें पाकिस्तान जैसी चीज है, तो मुस्लिम लीग को कोई पाकिस्तान का आश्वासन नहीं लग रहा था, तो दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग था, तो मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि ये चीज हो गई, क्रिस मिशन भी हो गया। अब कोई रास्ता कांग्रेस के पास नहीं था। इधर क्या हुआ कि तब तक तो सुभाष चंद्र बोस अभी क्विट इंडिया मूवमेंट जिस समय तक चला था, उसमें तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना तो नहीं की थी, लेकिन जापानीज का जिस तरह से एग्रेसिव रुख देख रहे थे गांधी जी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जापानीज जिस तरह से अपना एक्सपेंशन कर रहा है वो ब्रिटिश को टारगेट बना रहा है, तो ब्रिटिश को टारगेट बनाते हुए इंडिया भी जरूर आएगा। अब हियर आई हैव टू मेक इट क्लियर, नाउ द कांग्रेस वाज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन, कांग्रेस वाज प्लानिंग अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। The Congress was planning for the Quit India movement. You can say why Quit India movement? What are the regions or what are the regions? My students, I have always told you that actually whenever there is any question, you can say. Now suppose you can say you find out the question Quit India movement. So whenever you find a question, तो always you have to face कि what is origin. You know, in origin में एक फैक्टर आपको हमेशा लेना चाहिए इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में है द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन डिफरेंट क्लासेस, ये तो ऑलवेज रहेगा। एक जो impact of war है, it was going to affect capitalist class, the peasants, the commoners both, because there was the price rise, growing inflation, and one problem was the scarcity of paddy in Bengal particularly, you know, because actually in course of the Second World War, as you know, British were the allied with Australia and USA, and Australia and USA both are fighting against Japanese. So in one situation you can say during the Second World War, actually India used to import rice from Burma. But on Burma, there was the Japanese occupation, you know. The import of rice from Burma was disrupted. So there was the scarcity of paddy, scarcity of rice. In the meantime, when the American and Australian soldiers just, you can say, appeared in India, so in order to feed them, the government had to send extra grains and extra rice to military barracks. It also resulted into the scarcity of grains, you know. So later, in 1943, it could result into a great famine in Bengal, consuming nearly 4 million people. But even in course of even just before the Quit India movement, there was the scarcity of grains. So that was the one problem for the people, and growing inflation that created pressure over the people. Second one thing you can say, ki, failure of Cripps mission and Congress impatience. अब कांग्रेस अब धीरे धीरे कांग्रेस ने बहुत टाइम तक कांग्रेस वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम कि द गवर्नमेंट विल कम टू सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, बट द गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. Particularly Gandhi was impatient for the fact. My friends, you people may be surprised why Gandhi became so much aggressive. He even gave the slogan "Do or die." That is normally most of the students are getting confused. Why the slogan "Do or die"? Actually, what is the truth here? I have to share with you. In fact, Gandhi ji was much, you can say, worried about the future Japanese invasion, because the Japanese, my friends, whether you people are familiar with or not, Japanese are just like the butcher. Whenever the Japanese went, so British were much liberal than the Japanese, you can say. Japanese went, so they have, you can say, actually enslaved the people. Even they could, you can say, capture the women, and they converted them as entertainment women for their soldiers. They even tried to extract the mining material from this country. So it affected, very adversely affected the country concerned. So that's why you can say these governments, you know, these governments, you know, in this way, that was going to affect the people. That affected the people, you can say. And Gandhiji was much concerned about the Japanese policy. And Gandhiji believed that if the British would anymore stay in India, so Japanese, in order to fight against the British, they entered into India as well. And in this way, the British will put all the Indians in the condition of jeopardy. So it is better for British, you have to leave India. If you will leave India, then the Japanese would not move towards us. मतलब वो गांधी जी को कहीं ना कहीं जापानीज से बड़ा परहेज था. गांधी जी इस बात को जानते थे कि जापानी लोग बूचर हैं, जहां भी जाते थे वहां लोगों को दास बना, स्लेव बना देते थे, महिलाओं के साथ भी व्यवहार उनका बहुत बुरा होता था. और उसके अलावा वहां जो मतलब वहां पर बहुत सारे अपने सोल्जर्स के एंटरटेनमेंट विमेन बना दिया. साउथ ईस्ट एशिया के देश बहुत परेशान हुए थे जापानीज एक्सप्लॉइटेशन के कारण. उनका माइनिंग मटेरियल भी खोद के ले जाते थे, बहुत तरह से उनकी प्रताड़ना होती थी, बहुत तरह से उनको प्रोसिक्यूट करते थे. तो गांधी जी को लगता था कि ब्रिटिश से लड़ने के खातिर जापानीज इंडिया में आ जाएंगे और हम लोगों को एडवर्सली अफेक्ट कर देंगे. तो गांधी जी ने साफ ब्रिटिश को कहा कि आप या तो अराजकता पर या ईश्वर पर हमें छोड़कर चले जाइए, हम खुद देख लेंगे,
हम फाइट करेंगे खुद अगर जापानी जाएंगे तो। मतलब गांधी जी मेड स्टेटमेंट कि लीव अस आइदर टू एनार्की और टू गॉड एंड लिव इंडिया एज अर्ली एज पॉसिबल, तो क्विट इंडिया, दिस वाज द स्लोगन। थर्ड वन यू कैन सी कि व्हेन द सोल्जर्स ऑफ एलाइड पावर्स, soldiers of the allied power, what is this point? Actually Australian and American soldiers, they came to India, and my students, actually soldiers are, whenever the soldiers are deployed in some region, you can say they stayed in India because they had to fight against Japanese. But whenever the soldiers are deployed in the region, the soldiers are basically, civilians are very uncomfortable with the presence of the soldiers because particularly you can say they are the white soldiers, so they were not doing the, you can say they are doing some sort of savage behavior to Indians. So Indians were quite, you can say, disturbed at the behavior of the soldiers. तो ये भी एक तरह का discontentment पैदा किया कि सैनिकों का व्यवहार, soldiers का व्यवहार Indians के प्रति अच्छा नहीं था. And at the fourth one factor you can say is called the Earth policy. Earth policy and British and the British, it's called the Earth policy and the British approach to fishermen in the Bay of Bengal. Bay of Bengal. You have not to get confused with the term escort policy. Escort policy में क्या होता है कि लोग दुश्मन की आर्मी को, जो एनिमी दुश्मन पर है, उसके आर्मी को हरास करने के लिए सब चीजों को वहां पर मिटा देते हैं ताकि जो एनिमी सोल्जर्स को कुछ हाथ ना आए और वो डेमोलाइज हो जाए. तो उसमें क्या किया ब्रिटिश ने, जैसे बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि ब्रिटिश लोग तो बर्मा वगैरह तक पहुंच चुके थे, सिंगापुर तक पहले ले चुके थे, तो डर यह था कि ब्रिटिश कहीं जापानी बंगाल की खाड़ी के रास्ते इंडिया ना जाए. तो ब्रिटिश ने जानबूझ के क्या किया कि ब्रिटिश ने जो बे ऑफ बंगाल में जो बोट्स थे, जो मछुआरों के बोट्स थे, जो फिशरमैन के बोट्स थे, उसको ब्रिटिश सरकार ने डुबो दिए. अब दैट वाज गोइंग टू इनवॉल्व अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन इन बे ऑफ बंगाल, बिकॉज़ उन बेचारों के लाइवलीहुड का वही जरिया था. उस बोट्स को डुबो दिए, उस कारण से बहुत वाइडर डिसकंटेंटमेंट बंगाल में हुआ और बाकी रीजन्स में भी इसका रिपरकशन महसूस किया गया. तो यू कैन मेंशन 3 to 4 फैक्टर्स, ऑल्दो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन ऑन ओरिजिन, यू कैन से. So they finally, you can say, at that time Gandhi ji was very, among the Congress leaders, Gandhi ji was in a quite belligerent mood, you know, and he was in quite agitated mood. From June 1942 onwards, Gandhi ji came into a very agitated mood. Even in the July session and the July conference of Wardha, he expressed his aggressive mood. You know, at this time we are not going to make a compromise with the British. So Gandhi ji सबसे agitated mood में थे. And at that time the Congress president was, you can say, Maulana Abul Kalam Azad. Actually, Maulana Abul Kalam Azad became the Congress president in 1940 itself. In the meantime, when the Second World War started, so he continued on the post up to 1946. So actually, there is a very, you can say, touching story here which I have to share with you. Actually, Congress was at that time, in the moment, Congress was at that time in a very confused state, and it was almost all the leaders were well aware of the fact, and all the leaders came to this conclusion: we have not to launch any major movement against the British during this time. One thing, it will affect the British war efforts and it will help the fascist power. And the second one, if the Indians are going to launch any movement, the British would take the uncommon repressive measures, and that would result into the heavy casualties of the people. So the Congress leaders were not in the mood to launch any movement. Even Maulana Azad was in the same mood, or were in the, you can say, in the moment of inaction he was. In the meantime, there was some personal loss in his life. He was in the moment of a personal grief because doctor just refused, and the doctor refused the treatment to his wife, and doctor clearly told his wife could not survive more than 15-20 days. So it is better for Maulana Azad, in place of doing treatment to her, she should try to keep her into good humor and try to entertain her so that up to the last breath he could lead a peaceful life. So as Maulana Azad, being the Congress president, he was not having any extra work to do. So he stayed with his wife and he was just serving his wife. Sometimes he was reciting Quran, Holy Quran, to entertain her. Sometimes giving medicines, taking personal care. He was busy with serving his wife. In the meantime, Gandhi ji called Maulana. Here I am in a mood to do something. So Maulana Azad went to see Gandhi. Gandhi ji told him, Maulana, we have to launch a movement, an all India movement, and now we cannot wait further. We have to make the British quit India as early as possible. So Maulana Azad looked into the eyes of Gandhi. Ki, Bapu, have you thought it seriously? Because Maulana Azad was apprehensive that British would crack down on the people so vehemently, it might result into the heavy human loss. But Gandhi was quite in agitated mood. Yes, we have come to this conclusion, and we have to launch a movement either with Congress or without Congress. Then Maulana just took leave of Gandhi for some days, and he told him, I have just come to see you. And then Gandhi went to his wife, and in the very touchy moment, he told his wife, Begum, now there is the call from the nation which I cannot ignore. So please wait me in heaven. I will see you in heaven. I will come you, and then I will see you there. And after that, he moved out from his house and just went with Gandhi to Bombay session. And on 8th August, there was, the launching of this movement and proposal of Quit India. All India Congress Committee just approved this proposal, and there was the launching of the movement. मतलब मैंने आपको बताया कि मौलाना आजाद उस समय अपने व्यक्तिगत दुख के क्षण में थे. उनकी वाइफ ने, गांधी जी उधर मूवमेंट के मूड में थे, और उनकी वाइफ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कहा था कि अब 15 डेज से ज्यादा इस सर्वाइव नहीं करेंगी, तो इनको कोई मेडिसिन से कोई फायदा नहीं है, इनको बेहतर है कि वो थोड़ा एंटरटेन करें, थोड़ा खुश रखें, उनकी देखभाल करें जब तक हैं तब तक, ताकि शांति से उनकी जिंदगी चल सके. तो मौलाना आजाद अपनी वाइफ के सेवा, क्योंकि उनको कोई काम नहीं था, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, वही कभी वाइफ को कभी होली कुरान सुना रहे थे, कभी उनको मेडिसिन देते और अपने हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखते. उसी में गांधी ने कॉल किया कि मौलाना को बुलाओ. जब गांधी जी गए तो उन्होंने गांधी ने कहा कि देखो मौलाना, हम एक मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और ये ऑल इंडिया मूवमेंट एग्रेसिव होगा. तो मौलाना आजाद ने कहा कि बापू आपने अच्छे ढंग से सोच लिया. ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिश उसके बाद बहुत ज्यादा दमन चक्र चलाएगी, जिसमें बहुत लोग हताहत हो सकते हैं, बहुत मतलब कैजुअलिटीज हो सकती है. तो लेकिन गांधी ने कहा एकदम मैंने सोच लिया, बहुत एजिटेटेड मूड में थे, या तो कांग्रेस हमारे साथ है तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस के बिना भी जा सकते हैं.
तो मौलाना आजाद ने कहा कि बापू थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, और फिर जाके अपनी पत्नी से मिले, और उन्होंने बहुत ही उस मोमेंट में, बहुत टची मोमेंट में पत्नी को कहा, अपने बेगम की, बेगम हम अब आपसे हेवन में, स्वर्ग में, अब जन्नत में मिलेंगे, हम आपसे जन्नत में मिलेंगे, आप हमारा इंतजार करिए। उसके बाद फिर निकल गए और फिर बॉम्बे गए, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, आगे मूवमेंट लॉन्च हुआ। इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब तो टाइम हमारा ओवर हो गया। मिस्टर अंकुर, कोई मेरे बच्चों की क्वेरीज भी है क्या? हाँ, डिलीवरेंस डे एक्चुअली जिन्ना सेलिब्रेटेड, ज्योति जिन्ना और मुस्लिम लीग कॉन्ग्रेस में डिजाइन, तो मुस्लिम लीग जिन्ना जस्ट सेलिब्रेटेड डिलीवरेंस डे, एंड इवन अंबेडकर पार्टी सपोर्टेड इट। दिस वाज द डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस उसको बोलते हैं। Not simply British, against all, against Americans, against French, against Dutch. Who? Sachin. The Japanese were a different breed, and he was by nature they were aggressive, and against all the colonial power, all the powers, Western powers there. Okay. So my friends, now I'll see you tomorrow. I'll just continue from there. Even and tomorrow after finishing it, then I have to move to other topic. So I'll just give you some question tomorrow. So I'm stopping here today.